सऊदी अरेबिया एंड अमेरिका अ लॉन्ग रिलेशनशिप। सऊदी अरब और अमेरिका एक बहुत ही पुरानी दोस्ती या बहुत लंबा दीर्घावधि का संबंध वर्ल्ड इकोनॉमी और ऑयल इकोनॉमीज के डोमेन से। ट्रंप एंड द मुस्लिम्स वर्ल्ड। Despite all his anti-radical Islam rants, President Donald Trump chose Saudi Arabia as his first overseas official presidential visit destination. तो सबसे पहली अपनी ओवरसीज ऑफिशियल प्रेसिडेंशियल विजिट का डेस्टिनेशन उन्होंने सऊदी अरब को बनाया। हालांकि लगातार चरमपंथी इस्लाम के प्रति वे बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं। इन हिज इनॉग्रेशन सेरेमनी इन जनवरी 2017, he had bitterly castigated radical Islam globally. It is clear that his administration would retain the Saudi line on West Asia, contrary to the Obama outreach to Iran. I hope you remember that Obama administration had extended an olive branch to Iran. He had even struck the nuclear deal with Iran. The main aim was to help Iran jettison its radical streak and become a part of the mainstream. But Trump has reversed the complete idea, as is visible now. उसी को देखेंगे. This is a big development and has deep economic and political implications. America and Saudi Arabia, two big nations. America, the biggest economy of the world, and Saudi Arabia, one of the biggest oil producers of the world and one of the biggest Sunni states of the world. In figures, so we have taken this from a certain publication which gives us some idea about what happened. 1933 was the time when full diplomatic relations were established between America and Saudi Arabia. 1944 was the time when Aramco, जो आज सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी, जिसका ओरिजिनल नाम था अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी, it discovered the kingdom's vast oil reserves. और तब इनका पूरा भाग्य ही पलट गया। और उसके अलावा दूसरे बहुत सारे आंकड़े दिए हुए हैं। Number 1, the position that America holds as Saudi Arabia's top trading partner. So it is pretty clear that America wouldn't let go of such a partner so easily, despite all the strain the relationship saw in the past 10 years. So Wikipedia gives us this comparison between Saudi Arabia and United States. Population, area, density, capital, largest city, government. Unitary Islamic absolute monarchy. सऊदी अरब की सरकार पूरी तरह से एकात्मक इस्लामी संपूर्ण राजशाही। यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, संघीय राष्ट्रपति पद्धति की संवैधानिक गणतंत्र आधारित सरकार। So this is a huge difference. The first leader of Saudi Arabia, Abdul Aziz Ibn Saud, and for US, George Washington. Today's leader, Salman bin Abdul Aziz Al Saud. He is the king of Saudi Arabia, and Donald Trump is the king of America. Okay, so then you can see the major religious breakup, और इससे आपको काफी कुछ पता चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। So this is a picture from the earlier days. King Ibn Saud talking to President Franklin Roosevelt on board American ship Quincy after the Yalta Conference of 1945. और यहाँ से विश्व की राजनीति में बहुत भारी परिवर्तन होना शुरू हुए थे। These have been the various kings and the princes in the long line of descent in Saudi Arabia, where a single family of 9,000 members plus controls all the levers of power. This was the promotional material or posters or signages when Trump visited Saudi Arab in May 2017. Together we prevail. This is that anti-terror Muslim nations meet. So that's quite an outreach, although Iran wasn't called. This is the typical sword dance, which was criticized by many American liberals as being quite a shameless display of male chauvinism.
The Saudis. During his presidential campaign, Trump was very critical of Saudi Arabia. He was also not happy with most Muslim countries as he equated Islam with terror. So this happened in 2016 before he was elected the president. That showed in the determination to ban Muslims from entering the US. अब उसके बाद वो चुनाव जीते, राष्ट्रपति बने और तुरंत नए नए कार्यकारी आदेश, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए कि मुसलमानों को कुछ देशों के अमेरिका में आने से रोका जाए. But American courts blocked it. This was the proof that the constitutional balance of power was very strong in America. So this is how the past 1 year has been as far as Trump's public posturing against radical Islam was. Volte-face, a complete turnaround of approach. Trump seemed a changed man in Riyadh in May 2017. पूरी तरह से बदले नजर आ रहे थे सरकार. Earlier, his speeches had a significant anti-immigrant and anti-Muslim campaign rhetoric, but now President Trump struck a conciliatory note while addressing leaders from more than 50 Muslim nations in Riyadh, delinking Islam from terrorism and saying that Islam is peace. तो ये पूरा 180 डिग्री का टर्न अराउंड ट्रम्प की अप्रोच में आ चुका है. He was careful not to hurt Saudi Arabia's sentiments. The Saudis won a big reprieve in a छूट in a situation of deteriorating finances and a resurgent Iran. तो अभी बहुत बड़ी समस्या है सऊदी अरब के सामने. शेल ऑयल ने बहुत नुकसान किया है और ईरान पूरी तरह से फिर उफान पर है. ईरान is a Shia nation and Iran and Saudi Arabia have been traditional rivals. American shale oil too has hobbled the Saudis and it has helped India because the oil prices have collapsed, helping Indian government to maintain its fiscal deficit in check. Muslims killing Muslims. Trump said in his address that 95% of terror victims were Muslims themselves. He also said that he highlighted the challenges that the world was facing and called for unity in fighting. तो ये एक बड़ा balanced approach लेके वो चले. It also seemed that the strong Indian diplomatic efforts had worked. तो ये भी ये विश्लेषक कह रहे हैं कि शायद भारत द्वारा लगाए गए बहुत जोरदार कूटनीतिक दबाव काम कर गए, क्योंकि ट्रंप नेम्ड इंडिया एज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म और उन्होंने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया, नहीं वहां के प्रधानमंत्री से मिले. तो ये एक तरह से ग्लोबल डिप्लोमेसी में वन अप फॉर इंडिया. दैट लेटर बिकेम अ प्रॉब्लम फॉर डोमेस्टिक पाक पॉलिटिक्स. वहां बहुत सारी बुराई नवाज शरीफ को झेलनी पड़ी. Muslims have to find the solution. Trump made it very clear in his speech that Muslim nations have to take the lead in fighting radicalism within. अपने चरमपंथ से उन्हें खुद ही लड़ना है. And the world cannot do it for them. He urged Muslim nations to realize that the virus of extremism had incubated in their own societies and was wreaking havoc globally. So this is pretty clear as to what he is indicating. This was a pragmatic and rational Trump who distinguished between Islamic terrorism and Islamic faith. तो अभी तक जो इस्लाम धर्म और इस्लाम से उपजे आतंकवाद को एक ही नजर से देख रहे थे, वो राष्ट्रपति ने अब उन दोनों के बीच में एक मोटी रेखा खींच दी है. इंडिया हैज बीन रिपीटेडली सेइंग दिस फॉर मोर देन अ डेकेड ऑलरेडी. द इरानियंस आर अ ह्यूज फोर्स. अब इन्होंने ईरान को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया, बल्कि एक तरह से दुश्मनी वाले लहजे में बात कर ली. Perhaps Trump made a mistake by not striking a conciliatory note with Iran and hauling them up for supporting terror. The reformist President Hassan Rouhani was re-elected a few days back. As we all know, the presidential elections in Iran got over and Rouhani was elected. Saudi Arab has no elections at all. Please remember, it's a complete monarchy. Trump perhaps overlooked the fact that Iran itself was fighting Sunni Islamist terror groups, and Obama's effort to get Iran in the mainstream of global politics through the nuclear deal may come undone. तो ओबामा ने इतनी मेहनत करके इतने विरोध को झेलते हुए ईरान के साथ न्यूक्लियर डील कर ली थी. ट्रंप शायद उसे पूरी तरह खत्म करके ईरान को फिर से चरमपंथ की ओर मोड़ देंगे. So here is a beautiful comparison on certain critical religious parameters and otherwise amongst the various Middle Eastern nations. So as you can see, Iran and Kingdom of Saudi Arabia, KSA, two of the biggest nations there. If I zoom in, then Iran is a theocratic republic. वहाँ elections होते हैं, supreme leader लेकिन धार्मिक गुरु होते हैं. 10% are Sunnis and 89% are Shias. Whereas in the KSA, Kingdom of Saudi Arabia, which is a monarchy out and out, no elections, 95% are Sunnis and very few are Shia and others. So this is how the complete breakup works. I hope this is clear. And both Saudi Arab and Iran keep criticizing each other for proxy terror support. ऑयल की कीमतों में जो नाटकीय परिवर्तन $147 2008 से लेकर
$26 तक आ गया और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत स्टेबलाइज हुआ, इसने पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल नई दिशा में मोड़ा है। ह्यूमन राइट्स व्हाट? America, always ready to lecture India to its NGOs and others, has overlooked allegations of human rights violation in Saudi Arabia, especially women's pathetic condition. इस पे लेके किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। America and Saudi Arabia have deepened ties in energy and defense sectors, and a new $110 billion arms agreement was signed. तो ट्रंप साहब ने सऊदी अरब के साथ $110 अरब का हथियारों का नया समझौता किया। नो डाउट अमेरिका की आर्म्स इंडस्ट्री बेहद खुश होगी। दिस शोज हाउ डीपली द अमेरिकन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कैन इन्फ्लुएंस पॉलिसी डिसीजंस and may be reflective of Trump's effort to scuttle anger against him on the Russian imbroglio. अभी ट्रम्प अपने खुद के एक दलदल में धंसे हुए हैं। रूस के साथ उनके कुछ गलत रिश्तों को लेके बहुत आरोप लग रहे हैं, उसके चलते लोग इम्पीचमेंट की मांग कर रहे हैं। तो शायद उसकी आड़ में कहीं ना कहीं दबाव में इस तरह की डील्स हुई हैं और ट्रम्प ने अपने पूरे स्टैंड को मॉडरेट किया है। On Gurukul, you can get the best studies in the comfort of your home. Do check it out once, and we are constantly bringing newer courses for your amazing learning experience. This Cold War, that Cold War. Cold War तो लगता है दुनिया का फैशन बन गया है। America feels that the major cause of instability in West Russia is not just Iran, but the Cold War between Iran and Saudi Arab. President Obama tried to balance America's interest between Saudi Arabia and Iran, and he actually went ahead with the deal with Iran. But Trump, true to his unilateral style, at least बाहर से ऐसा दिख रहा है, has struck a different note. तो अमेरिका को ऐसा लगता है कि पश्चिम एशिया, जिसको भारत मिडल ईस्ट कहता है, वहां पर अस्थिरता के लिए केवल ईरान ही नहीं, लेकिन ईरान और सऊदी अरब के बीच चल रहा शीत युद्ध भी जिम्मेदार है। ओबामा ने बहुत कोशिश की थी कि सऊदी अरब और ईरान दोनों को बैलेंस करके चलें, वो अब समाप्त होता दिख रहा है। पीस मेकर एक मिसाइल का भी नाम है ये। इफ प्रेसिडेंट ट्रम्प वांट्स टू बी अ पीस मेकर एंड मेक वेस्ट एशिया सिक्योर, ही हैज टू रीच आउट टू बोथ साइड्स। ये बात बिल्कुल सभी लोग मानते हैं दैट यू कैन नॉट कास्टिगेट ईरान एंड आइसोलेट ईरान एंड देन एक्सपेक्ट पीस इन मिडल ईस्ट। इट इज नेवर गोइंग टू हैपन. And then Trump has to urge them to reduce tension. By taking sides, Trump will complicate the situation. The Trump mission for a more peaceful world is working its way through Saudi petrodollars as of now. For India, this may not be the best of news because we are working with Iran for a Chabahar port, etc., etc. Quiz time. Who is the present king of Saudi Arabia? कौन है भाई? नाम बताइए. The correct answer, as we saw today, Salman bin Abdulaziz Al Saud. How much amount worth of arms agreement has been signed by America with Saudi Arabia during President Trump's May 2017 visit? तो उनकी मई 2017 की सऊदी अरब यात्रा में कितना बड़ा हथियार समझौता हुआ? The correct answer is $110 billion. What is the main cause of instability in West Asia? पश्चिम एशिया, जिसको भारत मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट भी कहता है, वहां पर अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण क्या है? The correct answer is the continuing Cold War between Iran and Saudi Arabia, Iran being a majority Shia state and Saudi Arabia being a majority Sunni state. And the oil interests of the rich world keep conflicting. उम्मीद करते हैं इस सार में बहुत सारी बातें और ये क्विज क्वेश्चन से भी आपको बेहद मदद मिली।